अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की। इस वीडियो में मैं आपसे इस नावल के कोट्स शेयर करूंगी और इससे पहले ऑस्कर वाइल्ड के प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की समरी और कोट्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। और इन दोनों उस प्ले में और इस नावल में दोनों में मुझे ऑस्कर वाइल्ड के जो करैक्टर्स के डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फील हुए। और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये सीरियस नावल है और आई थिंक ये ऑस्कर वाइल्ड का वाहिद नावल है। इसके अलावा इन्होंने जो भी लिखे हैं वो प्लेस हैं। इस नावल की थोड़ी सी समरी आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे इस नावल के कोट्स शेयर करूँगी। इस नावल में मेन करैक्टर डोरियन ग्रे है, जो कि एक नहायत इनोसेंट सा और नहायत ख़ूबसूरत लड़का होता है और उसका बासिल एक आर्टिस्ट है जो उसका पोर्ट्रेट बनाता है। और बासिल का एक फ्रेंड है लॉर्ड हेनरी, जो कि एक इस तरह का शख्स है कि वो अपनी बातों से बहुत जल्द दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है डोरियन ग्रे के ऊपर। बासिल डोरियन ग्रे का पोर्ट्रेट बनाता है तो डोरियन ग्रे एक दुआया अंदाज़ में इस ख्वाहिश का इज़हार करता है कि उसकी जो एज का बर्डन है या उसकी जो सोल का जो भी बर्डन हो वो सारा उस पोर्ट्रेट के ऊपर चला जाए और वो इसी तरह हमेशा खूबसूरत रहे, यानी उसकी एज और उसके सिंस का असर उसके पोर्ट्रेट के ऊपर पड़े लेकिन उसके अपने ऊपर ना पड़े। तो फिर वो उस पोर्ट्रेट को अपने घर में ले आता है और फिर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिस तरह की भी उसकी लाइफ चल रही होती है उसी लिहाज से उस पोर्ट्रेट में उसकी पिक्चर में तब्दीली आ रही होती है, लेकिन असल में उसके अपने ऊपर नहीं आ रही होती। उसके गुनाहों और उसकी एज का असर सारा कुछ उस पोर्ट्रेट के ऊपर पड़ रहा होता है और वो ख़ुद यंग रहता है। डोरियन ग्रे बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत से गलत काम करता है, लेकिन उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा उसकी जो सोल का बर्डन है वो सारा उस पोर्ट्रेट के ऊपर पड़ रहा होता है और वो उस पोर्ट्रेट को सबसे छुपा कर रखता है क्योंकि वो बहुत ही देखने में भयानक है। फिर आखिरकार एक दफ़ा तंग आकर वो एक नाइफ़ लेकर उस पोर्ट्रेट को ख़राब करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस पोर्ट्रेट को नाइफ़ के ज़रिए फाड़ना चाहता है तो वो जो नाइफ़ है वो दरअसल उसके अपने ही दिल में लगता है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद वो ख़ुद जो जैसी वो पोर्ट्रेट थी वो ख़ुद वैसा बन जाता है और जो उसकी पोर्ट्रेट थी वो बिल्कुल सही खूबसूरत और यंग हो जाती है। तो इसी पर नावल ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं अपने बात करूं कि मुझे ये नावल कैसा लगा, तो स्टार्ट में नावल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ील हुआ, लेकिन कुछ चैप्टर्स के बाद मेरे लिए नावल थोड़ा सा बोरिंग था, इसमें सस्पेंस कम था, यानी और ये है कि इतना ज़्यादा करैक्टर्स जो थे वो अलाइव फ़ील नहीं हो रहे थे। ज़्यादातर डोरियन ग्रे को ही लेकर गए हैं ऑस्कर वाइल्ड, लेकिन उसमें उसके जो एक्शंस हैं वो इतने अलाइव नहीं फ़ील होते, यानी पैसिव फ़ील होते हैं। कोई दूसरा बता रहा है या इस तरह कर रहा है इस तरह कर रहा है, कोई एग्जैक्टली एक्शंस हमें नहीं नज़र आते और जो भी वो काम कर रहा होता है उनकी कोई सेंस भी नहीं नज़र आती कि वो किस तरह का क्यों कर रहा है, कैसे किस वजह से कर रहा है। हाँ, अलबत्ता लॉर्ड हेनरी के जो डायलॉग्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। तो अब मैं आपके साथ इस नावल में से अपने फेवरेट कोट्स शेयर करती हूँ। When I like people immensely, I never tell their names to anyone. It seems like surrendering a part of them. You know how I love secrecy. It is the only thing that can make modern life wonderful or mysterious to us. The commonest thing is delightful if one only hides it. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. The sitter is merely the accident, the occasion. It is not he who is revealed by the painter. It is rather the painter who, on the canvas, reveals himself. Poets are not so scrupulous as you are. They know how useful passion is for publication. Nowadays, a broken heart will run to many editions. I hate them for it. An artist should create beautiful things, but should put nothing of his own life into them. We live in an age when men treat art as if it were meant to be a form of autobiography.
We have lost the abstract sense of beauty. If I live, I will show the world what it is. There is no doubt that genius lasts longer than beauty. That accounts for the fact that we all take such pains to overeducate ourselves in the wild struggle for existence. We want to have something that endures, and so we fill our minds with rubbish and facts in the silly hope of keeping our place. The thoroughly well informed man, that is the modern ideal, and the mind of the thoroughly well informed man is a dreadful thing. It is like a bric-a-brac shop, all monsters and dust, and everything priced above its proper value. People are afraid of themselves nowadays. They have forgotten the highest of all duties, the duty that one owes to one's self. Of course, they are charitable. They feed the hungry and clothe the beggar, but their own souls starve and are naked. Beauty is a form of genius, is higher indeed than genius, as it needs no explanation. It is one of the great facts of the world, like sunlight or springtime, or the reflection in dark waters of that silver shell we call the moon. It cannot be questioned. It has its divine right of sovereignty. It makes princes of those who have it. You smile? Ah, when you have lost it, you won't smile. People say sometimes that beauty is only superficial. That may be so, but at least it is not so superficial as thought. To me, beauty is the wonder of wonders. It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible. Always, that is a dreadful word. It makes me shudder when I hear it. Women are so fond of using it. They spoil every romance by trying to make it last forever. It is a meaningless word too. The only difference between a caprice and a lifelong passion is that the caprice lasts a little longer. I am jealous of everything whose beauty does not die. I am jealous of the portrait you have painted of me. Why should it keep it? Why should it keep what I must lose? Every moment that passes takes something from me and gives something to it. Oh, if it was only the other way. If the picture could change and I could be always what I am now. Why did you paint it? It will mock me someday, mock me horribly. People who only love once in their lives are really shallow people. What they call their loyalty and their fidelity, I call either the lethargy of custom or the lack of imagination. Faithlessness is to the emotional life what consistency is to the intellectual life, simply a confession of failure. The reason we all like to think so well of others is that we are all afraid of ourselves. The basis of optimism is sheer terror. We think that we are generous because we credit our neighbor with those virtues that are likely to benefit ourselves. I did not treat it as a business transaction and I did not make any formal proposal. I told her that I loved her and she said she was not worthy to be my wife. Women are wonderfully practical, murmured Lord Henry, much more practical than we are. In situations of that kind, we often forget to say anything about marriage, and they always remind us. It often happens that the real tragedies of life occur in such an inartistic manner that they hurt us by their crude violence, their absolute incoherence, their absurd want of meaning, their entire lack of style. They affect us just as vulgarity affects us. They give us an impression of sheer brute force, and we revolt against that. Sometimes, however, a tragedy that has artistic elements of beauty crosses our lives. If these elements of beauty are real, the whole thing simply appeals to our sense of dramatic effect. Suddenly, we find that we are no longer the actors but the spectators of the play, or rather, we are both. We watch ourselves, and the mere wonder of the spectacle enthralls us. One should absorb the color of life, but one should never remember its details. Details are always vulgar. Thank you for watching this video. Please subscribe this channel. Jazakumullah khair.